Around this time a year ago, the Constitution was at risk. To frustrate the will of Parliament, the Deputy Speaker had thrown out its vote of no confidence against a falling Prime Minister. But the Supreme Court stepped in, it took suo motu, undid the Speaker's ruling, and restored the Assembly. And the bells tolled loud and long. "We profusely thank the Supreme Court," said Shehbaz Sharif. PTI partisans, meanwhile, screamed blue murder about biased judges. Amid all the noise though, there was little debate, with a few exceptions, about whether the opposition was justified in going for the vote, or whether the Chief Justice should form a full court of his own accord, or the nature of suo motu itself. And perhaps rightly so, as senior counsel Faisal H. Naqvi quoted recently, "The main thing is to keep the main thing the main thing. It remains for the court to regulate itself." The main thing last April was a prime minister trying to keep his enemies out of power by violating the Constitution. The Supreme Court stopped him. The main thing this April is a prime minister trying to keep his enemies out of power by violating the Constitution, delaying polls in 2 provinces set for 90 days. The Supreme Court stopped him again. But this time, the discussion is about everything but, from the regulation of suo motu to the formation of benches to the floods of 1988. And yet what's triggering this national nosebleed is clear, a widely despised minority government trying to prevent a specific outcome, elections within 90 days. The same gents once delirious with joy over the Chief Justice's powers now weep tears of rage. But none of the excuses trotted out so far pass muster. Consider a few. Could the chief ministers dissolve their assemblies? Yes, because they did it as provided for in the Constitution, one fresh from a vote of confidence in Punjab, the other with a thumping majority in KP. Then, could the Chief Justice take suo motu at all? Yes, because of democracy's destruction when the ECP broke the law, the governors shrugged, and all refused to obey the direction of the Lahore High Court's Justice Jawad Hossain mandating 90 days. Then, what about a full court? While there's no harm, no law or precedent warrants one, nor is this a case of first impression, just the glaringly obvious, elections must be held in 90 days. The last full court we had was for whether the Constitution had a basic structure during the military courts case. It went on to deliver the silliest, most divided, and most incoherent plurality in history. As law students know, these are all Tamazuddin-esque sideshows. In Tamazuddin, Justice Munir never actually decided the main thing, whether the assembly was sovereign. He twiddled his thumbs over technicalities instead, and wrecked democracy. This time, however, it's a different story. The same Bandial court that restored the assembly the PTI government aborted, again upheld the law on March 1, polls within 90 days. Hence also the unity regime's latest clownish attempt, a la Israel's Netanyahu, to declaw the judiciary, a bill that snatches away the Chief Justice's powers to take suo motu and form its benches, spreading it over a committee of 3, with a fresh appeal that all our disqualified for lifers are rubbing their hands over. But seeing as naughty thoughts shouldn't be pegged to the legislature, let's look at the law. Most legal eagles point to Article 191 in its favor, which reads, "Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court." The law in question, they argue, being the new bill. Only, a 5-member bench has already held the conferral, and exercise of suo motu isn't a matter of procedure at all. The tripartite categorization of the judicial process, held Justice Munib Akhtar, is not a matter of mere procedure, it is part of the very essence of the judicial power. The court has elsewhere reaffirmed the clause subject to law doesn't mean a statute can control or curtail the power conferred on the superior courts by this article. It remains for the court to regulate itself. Even otherwise, Item 55 of the Federal Legislative List excludes Parliament from legislating on the court's powers or jurisdiction, like grafting new floors of appeal on top what's already in the Supreme text. If PDM wants to interfere, it must amend the Constitution, not pass some bill at midnight under a banana tree. Finally, a thought to actual practice. Judges must themselves step away from samosa prices and policy.
But the suo motu is the natural result of facing an all-out assault by Musharraf, and winning. Diffusing that power by 3, given these divides, renders it dysfunctional, the last hurdle protecting an independent judiciary. Then back we go to Quetta registries, to judges yanked by the hair. There can be no more of that. The writer is a barrister. Published in Dawn, April 1, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. एक साल पहले इसी वक्त आइन खतरे में था। पार्लियामेंट की ख्वाहिश को नाकाम बनाने के लिए डिप्टी स्पीकर ने गिरते हुए वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया, उसने अज खुद नोटिस लिया, स्पीकर के फैसले को मनसूख कर दिया और असेंबली को बहाल कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि घंटियां बुलंद और लंबी थीं, हम सुप्रीम कोर्ट का तहे से शुक्रिया अदा करते हैं। दरी असना पीटीआई के हामियों ने मुतासिब जजों के कत्ल के नारे लगाए। ताहम तमाम तर शोर शराबे के दरमियान इस बारे में बहुत कम बहस हुई कि आया अपोजिशन का वोट न के लिए जाना जायज़ है या नहीं। क्या चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी से एक मुकम्मल अदालत तश्कील देनी चाहिए। खुद अज खुद नोटिस की नौयत। जैसा कि सीनियर वकील फैसल एच नकवी ने हाल ही में कहा था, बुनियादी बात यह है कि बुनियादी चीज को बुनियादी चीज के तौर पर रखा जाए। ये अदालत पर मुनहसर है कि वो खुद को रेगुलेट करे। गुज़िश्ता अप्रैल में सबसे अहम बात यह थी कि एक वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी करके अपने दुश्मनों को इक़्तिदार से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक दिया। इस साल अप्रैल में सबसे अहम बात यह है कि एक वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी करके अपने दुश्मनों को इक़्तिदार से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। 2 सूबों में इंतखाबात को 90 दिन के लिए मुअख्खर करना। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर रोक दिया, लेकिन इस बार बहस हर चीज के बारे में है, सिवाय इसके तज खुद नोटिस के रेगुलेशन से लेकर बेंचों की तश्कील से लेकर 1988 के सैलाब तक। इसके बावजूद इस कौमी सतह पर खून बहने की वजह यह वाज़ेह है कि एक वसी पैमाने पर हकीर अक़लियती हुकूमत 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात के मखसूस नताइज को रोकने की कोशिश कर रही है। वही लोग जो कभी चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर खुशी से झूम रहे थे, अब गुस्से के आंसू रू रहे हैं। लेकिन अब तक कोई भी उज़्र पेश नहीं किया गया। चंद सवालों पर गौर करें, क्या वज़राए आला अपनी असेंबलियां तहलील कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि उन्होंने आइन के मुताबिक ऐसा किया, एक पंजाब में एतमाद के वोट से नया और दूसरा के पी में भारी अक्सरियत के साथ। तो क्या चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस ले सकते हैं? जी हाँ, जमहूरियत की तबाही की वजह से जब इलेक्शन कमीशन ने कानून तोड़ा तो गवर्नर्स ने कंधे झुकाए और सब ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की 90 दिन की हिदायत मानने से इनकार कर दिया। फिर एक मुकम्मल अदालत के बारे में क्या ख्याल है? अगरचे इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कानून मिसाल उसकी जमानत नहीं देती है और न ही ये पहला तासुर है, सिर्फ वाज़े तौर पर वाज़े है, इंतखाबात 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। हमारे पास आखिरी फुल कोर्ट ये थी कि क्या फौजी अदालतों के केस के दौरान आइन में कोई बुनियादी ढांचा था। इसने तारीख में सबसे ज्यादा मुनक़सम और सबसे ज्यादा गैर मरबूत तकसीरीत फराहम की। जैसा कि कानून के तालिब इल्म जानते हैं, ये सब तमीज़ अल-दीन की तरह के साइड शो हैं। तमीज़ अल-दीन में जस्टिस मुनीर ने कभी भी असल बात का फैसला नहीं किया कि आया असेंबली खुद मुख्तार है या नहीं। इसके बजाय उन्होंने तकनीकी पहलुओं पर अपने अंगूठे फेरे और जमहूरियत को तबाह कर दिया। ताहम इस बार ये एक मुख्तलिफ कहानी है। इसी बिंदियाल अदालत ने जिस असेंबली को बहाल किया था, जिसे पीटीआई हुकूमत ने मनसूख कर दिया था, 1 मार्च को एक बार फिर कानून को बरकरार रखा, 90 दिन के अंदर इंतखाबात। यही वजह है कि इसराइल के नेतन्याहू की जानिब से अदलिया को कमजोर करने की ताज़ा तरीन कोशिश भी की जा रही है। एक ऐसा बिल जो चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस लेने और अपने बेंच बनाने के इख्तियारात छीन लेता है और इसे 3 रुकनी कमेटी में फैला देता है और एक नई अपील करता है कि हमारे तमाम नाअहल अफराद अपने हाथ रगड़ रहे हैं। लेकिन शरारती ख्यालात को मुकन्निना तक महदूद नहीं किया जाना चाहिए। आइए कानून पर नजर डालते हैं।
ज़्यादातर कानूनी माहिरीन इसके हक में आर्टिकल 191 की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें कहा गया है आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट अदालत के अमल और तरीकाकार को रेगुलेट करने वाले कवायद बना सकता है। उनका कहना है कि ज़ेर बहस कानून नया बिल है। सिर्फ 5 रुकनी बेंच पहले ही फैसला सुना चुका है और अज खुद नोटिस लेना तरीकाकार का मामला नहीं है। अदालती अमल की से फरीकी दर्जाबंदी जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ये महज तरीकाकार का मामला नहीं है, ये अदालती ताकत के जौहर का हिस्सा है। अदालत ने दूसरी जगह इस शक का अदा किया है कि कानून के ताबे का मतलब ये नहीं है कि कोई कानून इस आर्टिकल के जरिए आला अदालतों को तफवीज़ करदा इख्तियारात को कंट्रोल या महदूद कर सकता है। ये अदालत पर मुनहसर है कि वो खुद को रेगुलेट करे। इसके बावजूद वफाकी कानून साज फहरिस्त का आइटम 55 पार्लियामेंट को अदालत के इख्तियारात दायरा इख्तियार को कानूनी हैसियत देने से बाहर रखता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मत में पहले से मौजूद अपील की नई मंजिलों को शामिल करना। अगर पीडीएम मुदाखलत करना चाहती है तो उसे आईन में तरमीम करनी चाहिए, न कि आधी रात को केले के दरख्त के नीचे कोई बिल मंजूर करना चाहिए। आखिर में हकीकी अमल के बारे में सोचना, जजों को खुद समोसे की कीमतों और पॉलिसी से दूर रहना चाहिए। लेकिन अज खुद नोटिस मुशर्रफ की जानिब से हर तरह के हमले का सामना करने और जीतने का फितरी नतीजा है। इन तकस्मोहे को देखते हुए इस ताकत को 3 से तकसीम करना इसे गैर फाल बना देता है, जो एक आज़ाद अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ में आखिरी रुकावट है। इसके बाद हम क्वेटा रजिस्ट्रियों में जाते हैं, जजों के पास जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मज़मून निगार बैरिस्टर हैं। अखज़ शुदा बतारीख़ 1 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.